हैं ये साफ नजर आ रहा है। आइए बचे हैं अब 30 सेकंड, सवाल जवाब करते हैं खत्म, इंतजार करते हैं गवर्नर साहब का। भाषण शुरू होने वाला है और बताएंगे वो कि क्या कुछ करने वाले हैं। और हाँ, इस भाषण की एक खास बात और भी बता दूंगी, भाषण के अंत में या बीच में कहीं न कहीं महात्मा गांधी का एक कोट गारंटीड ये तो पक्का है, ये तो पक्का इतना तो मैं पॉलिसी का अंदाजा लगा सकता हूँ। बाकी तो देखिए गवर्नर साहब क्या कहेंगे वो मुझे पता नहीं। तो चलिए, आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी जिसका इस बार सबसे ज्यादा इंतजार है, क्योंकि मिड टर्म पॉलिसी में ब्याज दरें बढ़ाने के बाद ये पॉलिसी सबसे अहमियत वाली है। और जैसा मैंने कहा, इस पॉलिसी में काफी कुछ आपके लिए सीखने समझने को है और जानने को है कि आरबीआई गवर्नर साहब क्या कुछ कहते हैं इकोनॉमी के बारे में, महंगाई के बारे में, ब्याज दरों के बारे में, ग्रोथ के बारे में। वो आपको समझना चाहिए, सीखना चाहिए, क्योंकि ये पॉलिसी हाल ही की कई सारी पॉलिसीज में सबसे क्रूशियल, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहम है। इसलिए इसे मिस ना करें। हम कनेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं बस 10 बजे, वैसे 10 बजे तो समय था ही पॉलिसी के आने का। किसी भी वक्त आप आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास साहब को देखेंगे और वो अपनी पॉलिसी का ऐलान करेंगे। आइए, आरबीआई हेडक्वार्टर्स चलने की हमारी तैयारी है पूरी तरह से, और गवर्नर साहब जो भी आपके सामने रखेंगे उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेटा मैं आपको बता दूं। बैंक निफ्टी ने जस्ट बिफोर पॉलिसी पूरा लाल निशान माइल्ड होल्ड आउट कर रहा था, बैंक निफ्टी ने गेंस गिव। निफ्टी कल के लोज के नीचे आता हुआ दिखा है। कल हमने 16,347 का लो बनाया था, उसके नीचे निफ्टी जाता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी भी 35,000 के एम लेवल के नीचे। गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार। This is the third monetary policy statement of the current financial year, and the statement is as follows. In my statement of 4th May 2022, I had mentioned that as we navigate through this difficult period, it is necessary to be sensitive to the new realities and incorporate them into our thinking. The war in Europe is lingering, and we are facing newer challenges each passing day, which is accentuating the existing supply chain disruptions. As a result, food, energy, and commodity prices remain elevated. Countries across the world are facing inflation at decadal highs and persistent demand-supply imbalances. The war has led to globalization of inflation. Not surprisingly, central banks are reorienting and recalibrating their monetary policies. Emerging market economies are facing bigger challenges from the increased market turbulence, monetary policy shifts in advanced economies, and their spillovers. The process of economic recovery in the EMEs is also getting affected. During these difficult and challenging times, the Indian economy has remained resilient, supported by strong macroeconomic fundamentals and buffers. The recovery has gained momentum despite the pandemic and the war. On the other hand, inflation has steeply increased much beyond the upper tolerance level. A large part of the rise in inflation is primarily attributed to a series of supply shocks which can be linked to the war. In these circumstances, we have started a gradual and orderly withdrawal of extraordinary accommodation instituted during the pandemic, that is the COVID-19 pandemic. Similar to our resolute and timely actions to limit the economic damage emanating from the COVID-19 pandemic, the Reserve Bank will continue to be proactive and decisive in mitigating the fallout of the ongoing geopolitical crisis on our economy. We have already reprioritized our policies to control inflation without losing sight of the growth requirements. Our approach underscores a commitment to move towards normal monetary conditions in a calibrated manner, and our steps will be measured. We will remain focused on bringing down inflation closer to the target and fostering macroeconomic stability. Let me now focus on the decisions and deliberations of the Monetary Policy Committee meetings, the meeting which we had recently. Against this background, the Monetary Policy Committee, that is MPC, met on 6th, 7th, and 8th of June. And based on an assessment of the macroeconomic situation and the outlook, the MPC voted unanimously to increase the policy repo rate by 50 basis points
to 4.90% with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility, that is the SDF rate, stands adjusted to 4.65%, and the marginal standing facility, that is the MSF rate and bank rate, to 5.15%. The MPC also decided unanimously to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. Let me now explain the MPC's rationale for its decisions on the policy rate and the stance. The protracted war in Europe and the accompanying sanctions have kept global commodity prices elevated, and this is across the board. This is exerting sustained upward pressure on consumer price inflation well beyond the targets in most of the economies. The ongoing war is also turning out to be a dampener for global trade and growth. The faster pace of monetary policy normalization undertaken by systemic advanced economies, that is AEs, is leading to heightened volatility in global financial markets. This is reflected in sharp corrections in major equity markets, sizable swings in sovereign bond yields, US dollar appreciations, capital outflows from EMEs, and even from some advanced economies. The EMEs are also witnessing depreciation of their currencies. Global stagflation concerns are growing and are amplifying the volatility in global financial markets. This is feeding back into the real economy and further clouding the overall outlook. The MPC noted that in such challenging global environment, domestic economic activity is gaining traction, while inflation pressures have intensified further. The upside risks to inflation, as highlighted in the April and May 2022 policies of the MPC, have materialized earlier than anticipated, both in terms of timing and magnitude. Inflationary pressures have become broad-based and remain largely driven by adverse supply shocks. There are growing signs of a higher pass-through of input costs to selling prices. The MPC noted that inflation is likely to remain above the upper tolerance band of 6% through the first 3 quarters of the current financial year, that is 22-23. In this context, supply-side measures taken by the government in reducing excise duties on petrol and diesel, along with other measures, would help in mitigating the inflationary pressures to some extent. The MPC also recognized that sustained high inflation could unhinge inflation expectations and trigger second-round effects. The MPC therefore judged that further monetary policy measures are necessary to anchor the inflation expectations. Accordingly, the MPC decided to increase the policy repo rate by 50 basis points to 4.9%. The MPC also decided to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. It may be noted in this context that the repo rate still remains below its pre-pandemic level. I would now like to provide an assessment, a more detailed assessment of growth and inflation. And first, I would like to take up growth. According to the provisional estimates released by the National Statistical Office, that is NSO, on May 31st, India's gross domestic product, that is GDP growth, in 21-22 is estimated at 8.7%. This level of real GDP in 21-22 has exceeded the pre-pandemic, that is the 2019-20 level. On the supply side, major categories also surpassed the 2019-20 level. Available information for April and May indicates that the recovery in domestic economic activity remains firm, with growth impulses getting increasingly broad-based. Manufacturing and services purchasing managers indices, that is the PMI,
for May point towards further expansion of activity. This is also corroborated by movements in railway freight and port traffic, domestic air traffic, GST collections, steel consumption, cement production, and bank credit. While urban demand is recovering, rural demand is gradually improving. The contact-intensive services related to trade, hotels, and transport have recovered in Q4 of 21-22. Going by the early results of our surveys, capacity utilization in the manufacturing sector increased further to 74.5% in the fourth quarter of 21-22 from 72.4% in Q3 of 21-22. So that is in the last financial year, 21-22, between Q3 and Q4, the capacity utilization in the manufacturing sector increased from 72.4 to 74.5%. Capacity utilization is also likely to increase further in the current financial year. Investment activity is thus expected to strengthen, driven by rising capacity utilization, government's capital expenditure, and deleveraged corporate balance sheets. Improvement in investment activity is also reflected in pickup in demand for bank credit and persisting growth in imports of capital goods. Merchandise exports have remained buoyant with double-digit growth for the 15th successive month in May this year, while high growth of non-oil, non-gold imports is indicative of recovery in domestic demand conditions. Looking ahead, real GDP is expected to broadly evolve on the lines of the April MPC resolution. The forecast of normal southwest monsoon should boost Kharif sowing and agricultural output. This will support rural consumption. The rebound in contact-intensive services is expected to sustain urban consumption. Our surveys suggest further improvement in consumer confidence and households' optimism for the outlook a year ahead. Business sentiment remains upbeat according to early results of our surveys. Nevertheless, the negative spillovers from geopolitical tensions, elevated international commodity prices, rising input costs, tightening of global financial conditions, and slowdown in world economy continue to weigh on the outlook. Taking all these factors into consideration, the real GDP growth for 2022-23, that is for the current year, is retained at 7.2%, with Q1 at 16.2%, Q2 at 6.2%, Q3 at 4.1%, and Q4 at 4%, with risks broadly balanced. I would now like to focus a little more on inflation. The CPI headline inflation in April registered a further sharp increase to 7.8%. It was the fourth consecutive month when inflation touched or was above the upper tolerance level of 6%. The surge in headline inflation was seen across all major categories. The global geopolitical situation remains fluid and commodity markets remain on the edge, rendering heightened uncertainty to domestic inflation outlook. Certain positive developments on the prices front in recent weeks may help to ease the acute price pressures to some extent. These would include expectations of a normal southwest monsoon and Kharif agricultural season, the recent supply-side measures taken by the government and the unfolding of their impact, lifting of palm oil export ban by a major supplying country, that is Indonesia, and signs of moderation in global industrial metal price indices. Our quick survey of urban households undertaken after the excise duty cuts of petrol and diesel on May 21st shows a significant moderation in inflation expectations of the urban households. And we notice declines of
190 basis points in their 3-month ahead expectations and 90 basis points in their 1-year ahead expectations. In such a scenario, further reduction of state VATs on petrol and diesel across the country can certainly contribute to softening the inflationary pressures as well as the inflationary expectations. Notwithstanding these positive developments, upside risks to inflation do persist. These risks emanate from elevated commodity prices, revisions in electricity tariffs across many states, high domestic poultry and animal feed costs, continuing trade and supply chain bottlenecks, rising pass-through of input costs to selling prices in the manufacturing and services sectors, the recent spike in tomato prices which are adding to fuel inflation, and most important of all, the elevated international crude prices. With assumption of a normal monsoon in 2022 and average crude oil price in the Indian basket of $105 per barrel, inflation is now projected at 6.7% in 2022-23, that is the current year, with Q1 at 7.5%, Q2 at 7.4%, Q3 at 6.2%, and Q4 at 5.8%, with risks evenly balanced. It may be noted that around 75% of the increase in inflation projections can be attributed to the food group. Further, the baseline inflation projection that we are making now at 6 and 7% for the current year, it does not take into account the impact of monetary policy actions taken today. Between February and April, headline inflation has increased by about 170 basis points. With no resolution of the war in sight and the upside risks to inflation, prudent monetary policy measures would ensure that second-round effects of supply-side shocks on the economy are contained and long-term inflation expectations remain firmly anchored and inflation gradually aligns closer to the target, or rather close to the target. The monetary policy actions, including withdrawal of accommodation, will be calibrated, keeping in mind the requirements of the ongoing economic recovery. I would now like to touch upon the liquidity and financial market conditions. It may be recalled that in April, we introduced the Standing Deposit Facility, that is the SDF, as the floor of the liquidity adjustment facility, that is the LAF corridor, at an interest rate of 3.75%. This was effectively a rate hike of 40 basis points over the fixed rate reverse repo of 3.35%. As a result, the weighted average call money rate, that is the WACR, which is the operating target of monetary policy, moved from an average of 3.32% in March 2022 to 3.54% during April 8th to 30th. Following the repo rate hike of 40 basis points on May 4th, the WACR, that is the weighted average call money rate, has further increased, averaging 4.07% during May 5th to 31st. I'm taking May 5th because there was a rate hike on May 4th, as you would recall. In line with the emphasis on gradual withdrawal of accommodation articulated in the MPC resolutions of April and May, systemic liquidity has moderated in the recent period. Surplus liquidity, as reflected in average daily absorption under the liquidity adjustment facility, that is the absorption under SDF and the variable rate reverse repo auctions of 14 days and 28 days at 5.5 lakh crore. In other words, what I'm saying is that the surplus liquidity as reflected in the daily absorption under the LAF at 5.5 lakh crore during May 4th to 31st was lower than 7.4 lakh crore during April 8th to May 3rd.
Nevertheless, the overhang of excess liquidity has resulted in overnight money market rates on an average trading below the policy repo rate. At the longer end of the money market term structure, interest rate on 91-day treasury bills, commercial papers, and certificates of deposits have firmed up post the rate hike in May. Yields on AAA rated 5-year corporate bonds have also increased. The rate hike also led to an upward adjustment in the benchmark lending rates by the banks. The term deposit rates of banks have also increased, and this will augment stable funding resources amidst increasing credit demand. Going ahead, while normalizing the pandemic-related extraordinary liquidity accommodation over a multi-year time frame, the Reserve Bank will ensure availability of adequate liquidity to meet the productive requirements of the economy. The Reserve Bank will also remain focused on orderly completion of the government's market borrowing program. I have not listed out in my statement what steps we will take to ensure orderly implementation of the government's borrowing program. That is because we are monitoring the GSEC market very closely, and necessary steps would be taken by the RBI as and when required, as per the evolving scenario. A direct fallout of the geopolitical tensions and the rapid pace of monetary policy normalization by advanced economies is the exodus of portfolio capital flows from most EMEs. Several EME currencies have thus faced depreciation pressures. Safe haven demand for US dollar has increased amidst all this. The Indian rupee has moved in an orderly fashion and has depreciated by 2.5% against the US dollar during the current financial year so far, that is till yesterday. Now, this has fared much better than many of the EME peers. In other words, the performance, the Indian rupee has actually performed much better than the other EMEs and the many of the EME peers. Amidst all this, the Indian banking system remains strong and its health has improved in recent years as reflected in key indicators: capital adequacy, asset quality, provisioning coverage, and profitability. Bank credit offtake has gradually improved in recent months, supported by both resilience of the banking system and progressive normalization of economic activity. The strength of the banking sector and deleveraged corporate balance sheets will help us in sustaining economic recovery. I would now like to touch upon the external sector. India's exports have performed exceptionally well despite weakening recovery across major trading partners. The impact of rising crude oil prices on petroleum, oil, and lubricants, that is the POL import bill, has been partly offset by export of petroleum products, which also benefited from better price realizations in the recent months. Optimism on exports of both goods and services and remittances should help contain the current account deficit at sustainable level, which can be financed by normal capital flows. As on 3rd June this year, that is as on 3rd June, India's foreign exchange reserves were of the order of $601.1 billion US dollars, which are further supplemented by a healthy level of net forward assets of the RBI. Now, before I proceed to announcing certain additional measures, let me just say that the situation overall is challenging, but as we have dealt with the difficult situation that we were confronted with during the pandemic, we are committed and determined and resolute in dealing with the current challenge to the Indian economy, most of which are emanating from external factors. So that is a point which I would like to make emphatically. I shall now announce certain additional measures, the details of which are set out in the Statement of Developmental and Regulatory Policies, which form Part B of the MPC statement, and this will be uploaded in the RBI website soon after my statement is over.
And the additional measures are important, and they are as follows. The first set of announcements relate to regulatory measures in respect of cooperative banks. Considering the importance of cooperative banks in promoting inclusive growth, 3 measures are being announced for the cooperative banking sector. 1, the limits for individual housing loans being extended by urban cooperative banks and rural cooperative banks, which are basically state cooperative banks and district central cooperative banks, which were last fixed in 2011 and 2009 respectively, are being revised upwards by over 100%, taking into account the increase in house prices. This will facilitate better flow of credit to the housing sector. The second point relating to UCBs, the cooperative banking sector, the second announcement is that in line with the dispensation available to scheduled commercial banks and urban cooperative banks, it is now proposed to permit rural cooperative banks, and they consist of, as I mentioned, state cooperative banks and district central cooperative banks, to extend finance. So we are permitting the rural cooperative banks to extend finance to commercial real estate, that is residential housing. And this will be basically loans for residential housing projects within the existing aggregate housing finance limit of 5% of their total assets. This measure will further augment credit flows from the cooperative banks to the housing sector. The third measure in respect of cooperative banks is that we have decided to permit urban cooperative banks to extend doorstep banking services to their customers. This will enable the urban cooperative banks to meet the needs of their customers, especially the senior citizens and the differently abled. The next announcement relates to margin requirements for non-centrally cleared derivatives. Basically, I am referring to the OTC bilateral derivatives. With the objective of strengthening the resilience of OTC derivative market and in line with the G20 reforms, the Reserve Bank is putting in place margin requirements for non-centrally cleared OTC derivatives. Let me repeat. With the objective of strengthening the resilience of OTC derivative market and in line with the G20 reforms, the Reserve Bank is putting in place margin requirements for non-centrally cleared OTC derivatives. In the first phase, directions on exchange of variation margin for these non-centrally cleared derivatives were issued on 1st of June after consultation with the stakeholders. In the second phase, it is now proposed to mandate the requirements of the exchange rate. In the second phase, it is now proposed to mandate the requirements for exchange of initial margin for such derivatives. To garner feedback from stakeholders on these requirements, draft directions on exchange of initial margin for these derivatives will be issued shortly. The next announcement is important. It relates to e-mandate on cards for recurring payments, enhancement of the limit. The framework for processing of e-mandate based recurring payments was introduced by the Reserve Bank, keeping in mind the benefits of convenience, safety, and security to the users. Under this framework, over 6.25 crore mandates have been registered in favor of large number of domestic and over 3,400 international merchants. To further facilitate recurring payments like subscriptions, insurance premia, education fees of larger value under the framework, the limit is being enhanced from rupees 5,000 to rupees 15,000 per transaction. This will further leverage the benefits available under the framework and augment customer convenience. The next announcement relates to UPI, that is Unified Payment Interface, and their linking of the UPI to RuPay credit cards. UPI has become the most inclusive mode of payment in India with over 26 crore unique users and 5 crore merchants on
the platform. The progress of UPI, in fact, in the recent years has been unparalleled, and its overall functioning has been quite exemplary, and now many other countries are engaged with us in adopting similar modes and similar methods in their countries. In May this year alone, about 594 crore transactions amounting to rupees 10.4 lakh crore were processed through the UPI. At present, UPI facilitates transactions by linking savings or current accounts through users' debit cards. It is now proposed to allow linking of credit cards on the UPI platform. To begin with, the RuPay credit cards will be linked to the UPI platform. This will provide additional convenience to the users and enhance the scope of digital payments. And finally, the final announcement relates to review of Payment Infrastructure Development Fund scheme, that is the PIDF scheme. We had launched a fund if you remember, last year to sort of proliferate and to spread the payment infrastructure, the digital payment infrastructure across the country, and this relates to that. The Payment Infrastructure Development Fund, that is the PIDF scheme, was operationalized by the Reserve Bank in January 2021 to incentivize the deployment of payment acceptance infrastructure, such as physical point of sale, that is POS machines, mobile POS machines, quick response codes, that is QR codes, in Tier 3 to Tier 3 centers and in the northeastern states. Beneficiaries of the PM Swanidhi scheme in Tier 1 and 2 centers were included in this scheme in August 2021. As at the end of April this year, over 1.18 crore new touch points have been deployed under the scheme against a target of 90 lakh touch points to be deployed over 3 years, that is till end of 2023. In fact, we had kept the targets a bit conservative because in the beginning we did not want to overcommit. But now I am happy to report that in just about 1.5 years, we have exceeded the target which was set for ourselves and for the banks for the next 3 years. So it is therefore proposed to make certain modifications to the PIDF scheme by enhancing the subsidy amount, simplifying the subsidy claim process, and by other steps. This will further accelerate and augment the deployment of payment infrastructure in the targeted geographies. I would now like to conclude my remarks for today. Experience teaches us that preserving price stability is the best guarantee to ensure lasting growth and prosperity. Our actions today will impart further credibility to our medium-term inflation target, which is the central tenet of a flexible inflation targeting framework. India's recovery is proceeding apace, offering us space for an orderly policy shift. While we will continuously assess the evolving situation to tailor our responses, our actions must demonstrate the commitment to keep inflation and inflationary expectations under check. Therefore, monitoring and assessing inflation pressures and balancing risks to growth, I repeat, monitoring and assessing inflation pressures and balancing risks to growth will be crucial for judging the appropriate policy path as we move ahead. The road we have traveled during the recent past has indeed been very arduous, but we gathered faith, focus, and fortitude along the way. Our actions today are in continuation of the several measures that have been taken recently to achieve price stability. Given the elevated uncertainties of the current period, we have remained dynamic and pragmatic rather than being bound by stereotypes and conventions. As the Reserve Bank works tirelessly in its pursuit of maintaining macro-financial stability, I am reminded of what Mahatma Gandhi said long time ago. If we want to overtake the storm that is about to burst, we must make boldest effort to sail full steam ahead. Thank you, stay safe,
Stay well. Namaskar. ओके तो ये है आरबीआई गवर्नर साहब की तरफ से क्रेडिट पॉलिसी, और क्रेडिट पॉलिसी बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक रही है, जहां आधा % की ब्याज दरों में बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है। और अब ये ब्याज दरें जो रेपो रेट है 4.4% से 4.9% कर दी गई है। सबसे खास बात यही है। दूसरी खास बात यह है कि इस बार सीआरआर में किसी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं की गई, यानी कि सिस्टम में से लिक्विडिटी और कम करने का फिलहाल आरबीआई गवर्नर साहब का इरादा नहीं है। तीसरी खास बात है कि वित्त वर्ष 2023 जो इस 1 अप्रैल से हमने इस वित्त वर्ष की शुरुआत की है, अगले मार्च तक जो चलेगा, उसकी जीडीपी ग्रोथ में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं, न तो साल भर में न तिमाही दर तिमाही में। 7.2% की जो जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा था वही जस का तस मेंटेन रखा है। लेकिन पॉलिसी में जो कुछ भी अगर खराब और चिंता की बात है तो वो है महंगाई, और महंगाई की चिंता आरबीआई गवर्नर को दोनों फ्रंट पर है, ग्लोबल महंगाई की भी और साथ ही साथ लोकल खाने पीने की चीज़ों की महंगाई की भी। फूड इन्फ्लेशन अभी भी ऊपर है और आरबीआई गवर्नर साहब के एक्सेप्ट करने के दायरे से बाहर है। अनुमान 1% से बढ़ाया गया है। वित्त वर्ष 2023 के लिए पहले अनुमान था महंगाई का 5.7%, इसे बढ़ाकर 6.7% कर दिया गया है, यानी कि 1% महंगाई बढ़ेगी और लगभग हर एक तिमाही में पहली से लेकर आखिरी तिमाही तक महंगाई दर बढ़ने के अनुमान हैं, और ये जो अनुमान है इन्हें बढ़ाया है। तो ये है अब तक की खास बातें। इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कुछ अच्छी खबर आती हुई दिख रही है, जहां पर ये कि अर्बन बैंक और ग्रामीण बैंक अपना जो होम लोन देते थे उसकी लिमिट को अब डबल कर पाएंगे, यानी कि दुगने होम लोन दे पाएंगे। और साथ ही जो ग्रामीण सहकारी बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, जो गाँव में होते हैं, वो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के लिए वो अब कमर्शियल लोन बिल्डर्स को दे पाएंगे। अगर गांव में घर बन रहे हैं, कोई बिल्डर्स वहाँ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, तो वो कोऑपरेटिव बैंक से भी लोन ले पाएंगे। ये कुछ एक बड़ी बात है। साथ ही एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, यूपीआई के साथ क्रेडिट कार्ड्स को लिंक कर दिया गया है, तो अब क्रेडिट कार्ड्स का दायरा थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये सारा का सारा एक्शन है। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं, मुलाकात करते हैं देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद जी बिजनेस के लिए समय देने के लिए। नमस्कार। बताएं सर, आरबीआई गवर्नर साहब की तरफ से जो पॉलिसी में 0.5% की ब्याज दरें बढ़ाई गई, कैसे देखते हैं सर आप इसे? मेरे ख्याल से जैसा मार्केट ने तो ऑलरेडी इस चीज को फैक्टर कर लिया था, जब लास्ट 40 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज हुआ था, तब से जो है मार्केट ने फैक्टर कर लिया था इस बात को। तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली ही ये जो रेपो रेट बढ़ा है वो मार्केट की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली है, लेकिन द इंटेंशन इज टू कंटेन द इन्फ्लेशन। सो आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी क्लियर। और ग्रोथ, एक इमर्जिंग इकोनॉमी में ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है कि इन्फ्लेशन को कंटेन कर रखा जाए जी। तो इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। ये बिल्कुल स्टेप राइट डायरेक्शन में, लेकिन महंगाई का अनुमान गवर्नर साहब ने बढ़ाया है, क्या इसको देखते हुए आगे भी ब्याज दरें बढ़ने का खतरा अभी बरकरार है? आप गवर्नर साहब की लैंग्वेज को कैसे पढ़ रहे हैं सर? ये तो मेरे ख्याल से समय के साथ साथ पता चलेगा, क्योंकि ये सब चीजों में बहुत और वेरिएबल्स भी रहते हैं जिनका उनकी ध्यान में रखना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से बट ये चीज बड़ी क्लियर है कि आरबीआई बड़े क्लोजली इन सब चीजों को मॉनिटर कर रहा है, उसी तरह से इसको आगे बढ़ाया जाएगा जी। एक और बात जो है वो सीआरआर को लेकर है। इस बार सीआरआर में किसी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, क्या ये भी उम्मीद के मुताबिक है और आपको लगता है कि ये एकदम सही कदम है, फिलहाल बढ़ोतरी नहीं करना ठीक है? मेरा ख्याल से ये भी जो है ये भी एक्सपेक्टेड था कि शायद सीआरआर में कोई इंक्रीज नहीं होगा, तो क्योंकि एक्सेस लिक्विडिटी ऑलरेडी काफी कम हो चुकी है, 5 ट्रिलियन के करीब थी, 5 लाख करोड़ के करीब थी पहले जब 40 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज हुआ था। ये अभी कुछ 3 लाख करोड़ के करीब है अभी। तो 50 बेसिस पॉइंट जब वो सीआरआर बढ़ा था तो उससे कम हो गया। मेरे ख्याल से अब इसमें मेरे को उम्मीद नहीं थी हम लोगों को कि सीआरआर बढ़ेगी। ओके, तो ये एक अच्छी चीज है। और जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बरकरार रखा है आरबीआई गवर्नर साहब ने इस साल के लिए 7.2%, 7.2% पर। आपको लगता है सर इस बदले हुए माहौल में हासिल कर पाएंगे? बड़ा प्रैक्टिकल उन लोगों ने जो प्रोजेक्शन किया, बड़ा प्रैक्टिकल प्रोजेक्शन है, तो मेरे को लगता है कि मेरे को पूरी आशा है कि ये संभव हो पाएगा जी। खारा साहब, एक और चीज जो देखने को मिली पिछली बार मिड पॉलिसी में जब ब्याज दरें बढ़ी उसके बाद से लगातार बैंक्स पास ऑन करते दिख रहे हैं और जाहिर सी बात है करनी भी पड़ेगी।
0.5% जो आज ब्याज दरों में बढ़ोतरी हुई है, एसबीआई किस तरह से स्टैंड लेगा और कब तक आप उम्मीद करते हैं कि ये ब्याज दरें पास ऑन की जाएंगी? इस विषय में हम अपने एल्को में डिस्कशन करेंगे, उसके बाद ही कुछ बतला पाएंगे हम। जी, और एक और सवाल आपसे जाने से पहले जो मैं पूछना चाहता हूं वो कि फाइनली क्रेडिट कार्ड्स को भी यूपीआई के साथ लिंक किया गया है। डिजिटल पेमेंट्स को लेकर आरबीआई गवर्नर साहब का जोर इस पॉलिसी में साफ दिख रहा है। कैसे देखते हैं सर आप इसे? बहुत ही वेलकम सिचुएशन है इकोनॉमी, हम लोगों की इकोनॉमी को देखते हुए क्रेडिट कार्ड के साथ में यूपीआई का लिंकअप होना जो है, इट्स अ वेरी वेलकम स्टेप। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए और क्रेडिट पॉलिसी पर आप अपना एक क्विक रिएक्शन देने के लिए। दिनेश खारा साहब, चेयरमैन एसबीआई के, बताते हुए अपनी राय आरबीआई गवर्नर साहब की पॉलिसी को लेकर। आइए, हमारा पूरा पैनल हमारे साथ तैयार है पॉलिसी को लेकर पूरा विश्लेषण करने के लिए। अजय बग्गा साहब, राहुल अरोड़ा साहब और साथ ही वृंदा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और महेंद्र जाजू साहब भी हमारे साथ तैयार है। बग्गा साहब, क्विक रिएक्शन पहला आपकी तरफ से। 4/4 मिला अनिल जी मुझे, 50 बेसिस पॉइंट, कोई सीआरआर हाइक नहीं, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, जीडीपी सेम रहेगा, इन्फ्लेशन बढ़ाई जाएगी और महात्मा गांधी का कोट होगा जो आपने कहा था। तो ए प्लस मिला। एब्सोल्युटली बैंग ऑन। बिल्कुल सर, आपने पॉलिसी से ठीक पहले जो अनुमान लगाया, आज ही नहीं लगातार पिछले कई दिनों से आप इस अनुमान पर बिल्कुल है। तो आरबीआई गवर्नर साहब ने वही कहा, वही किया जो बग्गा साहब सुनना देखना और अनुमान लगा कर रखे थे, वही सब कुछ होता दिखा है। वृंदा जी, आपका फर्स्ट रिएक्शन पॉलिसी पर? अनएक्सपेक्टेड लाइंस यही कहूंगी। पहली बात तो आरबीआई गवर्नर ने देखिए ये कहा है कि सिचुएशन इज चैलेंजिंग केवल भारत के लिए नहीं, चैलेंजिंग फॉर द वर्ल्ड। और इस स्थिति में उन्होंने जीडीपी ग्रोथ को मेंटेन किया है 7.2% पर। ये जीडीपी ग्रोथ को उन्होंने टच नहीं किया, क्योंकि देखिए जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो बढ़ रही है, गवर्नमेंट की कैपेक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, जिससे ग्रोथ को इम्पेटस मिल रहा है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, तो इसे ग्रोथ की तरफ से चिंता थोड़ी कम है अभी। और जो इन्फ्लेशन है, पूरे उनके स्पीच में आपको ये दिखेगा कि इन्फ्लेशन पर उनकी चिंता बहुत बनी हुई है। और जैसे वो कह रहे हैं कि 7% के पार रहेगा पूरे कैलेंडर ईयर FY22 में, और उसके बाद ही जाके हम अगले साल देख सकते हैं कि इन्फ्लेशन थोड़ा कम हो। तो यानी इस बार जो है इन्फ्लेशन को लेकर सबसे बड़ी चिंता बनी है, और ये सारी चिंताएं एक्सटर्नल फैक्टर से आ रही हैं, फूड से आ रही है और फर्टिलाइजर और ऑयल वगैरह से आ रही है। तो यानी अभी जो सिचुएशन है वो चैलेंजिंग है, लेकिन इंडिया की स्थिति राइट नाउ मच बेटर देन अदर कंट्रीज। तो उनको फोकस यही है कि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल पे रखें ताकि हमारे ग्रोथ पे कुछ इम्पैक्ट ना हो। एक जो है डाउनसाइड रिस्क मुझे दिख रहा है वो है पावर सेक्टर से। देखिए, पावर सेक्टर 43% ऑफ पावर जनरेटर इज यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग। तो अगर पावर में कुछ कमी आती है, कुछ तो प्रॉब्लम होता है, तो इससे इंडस्ट्रियल सेक्टर, स्पेशली दोज व्हिच यूज पावर अ लॉट, लाइक एल्यूमिनियम, स्टील वगैरह, जिससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं, तो उससे इकोनॉमी की जो जीडीपी है वो थोड़ी इम्पैक्ट हो सकती है। लेकिन अब तक जो है जीडीपी इज ऑन ट्रैक और इन्फ्लेशन की चिंताएं जो है वो बनी हुई है, इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत आवश्यक है। तो हम गोइंग फॉरवर्ड हम देख सकते हैं कि ये जो रेट इंक्रीज का जो आरबीआई ने शुरू कर दिया है सिलसिला, ये अभी चलता ही रहेगा, लेकिन जाती जाती 50 बेसिस पॉइंट्स के बदले में से 25 बेसिस पॉइंट से रेट कट होते दिखेंगे हमें। लेकिन अब तक वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर सीइंग रेट इंक्रीजेस। बिल्कुल, तो ये आपके लिए पॉलिसी को लेकर खास बात है। आइए राहुल अरोड़ा साहब से पॉलिसी के लिहाज से एक बाजार का रिएक्शन भी लिया जाए, लेकिन उससे पहले बता दूं दिन के हाई पॉइंट पर बाजार आ चुके हैं। 16,475 पर निफ्टी ट्रेड करा है, लेकिन बैंक निफ्टी ने जबरदस्त उछाल दिखाया, 350 पॉइंट का 35,360 का हाई बनाया। दीप, टारगेट डन, 35,275 35,350 दोनों टारगेट आ चुके हैं, और लो भी आप देखिए 35,840 के 34,840 के आसपास का। तो ट्रेडिंग रेंज के दोनों सिरे न्यूट्रल पॉलिसी पर जो हमने रेंज दी थी, दोनों तरफ की रेंज आपके लिए आ गई, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही। तो आइए एक बार राय ली जाए कि पॉलिसी को कैसे देख रहे हैं बाजार के लिहाज से। राहुल जी बताएं सर। अनिल जी, एक्चुअली बहुत ही पॉजिटिव पॉलिसी जिस तरह से मैंने देखा, क्योंकि एक तरफ से जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि 75 बेसिस पॉइंट की इंक्रीमेंटल रेट हाइक आएगी, उसमें से 50 तो ऑलरेडी आ चुकी है। तो जहां तक मार्केट का अनुमान रहेगा, वो सोचेंगे कि मे बी अनदर 25 बेसिस पॉइंट्स इज लेफ्ट। लेकिन अनिल जी, 2-3 चीजें बहुत काफी इंटरेस्टिंग थी। एक तो उन्होंने ग्रोथ को टच नहीं किया, तो आई वुड एक्चुअली व्यू दैट एज अ पॉजिटिव, दैट ही हैज नॉट रिवाइज्ड द नंबर लोअर।
और अगर आप Q1 से Q4 का आप उनका इन्फ्लेशन ट्रैजेक्टरी देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट 2 परसेंटेज पॉइंट्स इन्फ्लेशन को डिक्रीज होते हुए देख रहे हैं एज द फाइनेंशियल ईयर प्रोग्रेसेस। और उन्होंने कहा कि ट्रांसमिशन ऑफ द इन्फ्लेशन इज ऑल्सो हैपनिंग। He spoke about very good urban demand and rural demand picking up. तो I think net एक काफी बहुत ही, जहां से मैं देख रहा हूँ, एक बहुत ही पॉजिटिव पॉलिसी थी, क्योंकि मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग है। आई थिंक दे विल FY24 के अगर आप अर्निंग्स देखें तो दे विल बी फैक्टरिंग इन अ मच मोर बिनाइन इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट। तो मुझे लगता है कि इफ एनीथिंग एल्स दिस पॉलिसी वाज मार्केट पॉजिटिव। आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि अगर आज बाजार डे के हाई पे भी बंद हो जाए, लेकिन मुझे ऐसा, इस पॉलिसी से मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि जो मार्केट नेगेटिव था। इनफैक्ट इफ एनीथिंग, जैसे मैंने कहा, अर्निंग्स पॉजिटिव है, डायरेक्शनली इन्फ्लेशन पॉजिटिव है क्योंकि नीचे घटता हुआ नजर आ रहा है, ग्रोथ को टच नहीं किया गया है। और जैसे हम पहले चर्चा कर रहे थे कि 10 ईयर बॉन्ड यील्ड ऑलरेडी 75 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक फैक्टर इन कर चुका है, उसमें से 50 ऑलरेडी आ गया है। तो आई थिंक नेट अ वेरी गुड पॉलिसी फ्रॉम अ मार्केट स्टैंड पॉइंट, फ्रॉम अ कॉर्पोरेट अर्निंग स्टैंड पॉइंट, फ्रॉम द वे द रिजर्व बैंक इज लुकिंग एट इन्फ्लेशन कमिंग डाउन, and no reason just on this policy to be negative at all on the market. ओके तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा बाजार के लिहाज से। और आपकी कमेंट्री के बाद राहुल और जोश बढ़ता हुआ दिख रहा है। 16,500 के पार निकलता हुआ निफ्टी और 35,400 पर आता हुआ बैंक निफ्टी तेजी और बढ़ती हुई नजर आ रही है। और बार बार लगातार दीप जो हम कर रहे हैं, लीडरशिप सिर्फ और सिर्फ बैंक से आएगी। जब तेजी करने का मूड हो, बैंक्स और ऑटो खरीदिए, बैंक्स और ऑटो खरीदिए। देखिए बैंक निफ्टी अब 1.25% मजबूत हो चुका है, 35,425। ठंडा सा रिएक्शन बॉन्ड मार्केट का भी है जो कि इक्विटी मार्केट पसंद करता है। तो महेंद्र जाजू साहब हमारे साथ हैं, मेरे एसेट मैनेजमेंट के CIO हैं। जाजू साहब, बॉन्ड मार्केट के लिहाज से, डेट मार्केट के लिहाज से, फिक्स इनकम के लिहाज से कैसी है पॉलिसी? तो जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था अनिल जी की पॉलिसी इज इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन, और काफी लोग थोड़ा सा CRR में एक्सपेक्ट कर रहे थे चेंज, वो नहीं हुआ तो वो थोड़ा सा पॉजिटिव रहा। और बॉन्ड मार्केट जो वो काफी ये 50 बेसिस पॉइंट्स हाइक को ऑलरेडी प्राइसिंग कर रहा था, तो पॉलिसी के बाद बॉन्ड यील्ड्स एक्चुअली 5 बेसिस पॉइंट्स नीचे आ गए। जो 7.5 के आसपास 10 ईयर यील्ड थे वो 7.45 पे आ गए। तो मेरे ख्याल से मार्केट ने पॉलिसी को अच्छे से एब्जॉर्ब किया है। और एक की कमेंट जो गवर्नर साहब ने बोला कि दे आर वॉचिंग द मार्केट वेरी क्लोजली, कि गवर्नमेंट के बोरोइंग प्रोग्राम को कैसे स्मूथली कंडक्ट करना है, उसके लिए जो मेजर्स उन्हें लेने हैं वो जैसी सिचुएशन होगी उसके हिसाब से करेंगे। तो वो एक छोटा सा संकेत था मार्केट के लिए कि जो मार्केट ने एक्सपेक्टेशन फैक्टर इन किया वो कहीं ना कहीं सही है। इसलिए हमने देखा कि थोड़ा सा बाजार में इम्प्रूवमेंट हुआ। सो इट्स अ गुड पॉलिसी। और आगे जो रेट हाइक आएगी वो जैसा गवर्नर साहब ने बोला कि कैलिब्रेटेड अप्रोच होगा, तो मार्केट उसको धीरे धीरे अब्जॉर्ब करता रहेगा। सो लगता है कि मार्केट स्टेबल रहेगा, बॉन्ड मार्केट में सभी थोड़े दिन स्टेबल रहने। तो चलिए ये मार्केट के लिहाज से पूरा का पूरा पॉलिसी का एक्शन। बग्गा साहब, एक और सवाल आपसे ये कि गवर्नर साहब ने 2 चीज़ों पर खास बात कही। एक तो इन्फ्लेशन का टारगेट जो बढ़ा है 1% से, साथ ही ये कहा कि आज जो 0.5% ब्याज दरें बढ़ाई इसका असर हमने इसमें गिना नहीं है, वो आना बाकी है। 2 चीज़ें, एक ग्लोबल इन्फ्लेशन और दूसरा टमाटर का नाम भी लिया उन्होंने कि हमारे यहाँ भी खाने पीने की चीज़ों के दाम कम हो नहीं रहे। कैसे देख रहे हैं आप इन्फ्लेशन के आंकड़ों को, और क्या लगता है जो 6.7% का जो इन्फ्लेशन का आंकड़ा RBI ने रखा है इस साल के लिए, उससे कम इन्फ्लेशन हासिल कर पाएंगे? नहीं हो पाएगा अनिल जी। और देखिए पिछली बारी 5.7 था, वो 6.7 लेके आए, तो क्लियरली दिख रहा है कि कितना इम्पैक्ट आ रहा है इन्फ्लेशन पे। और रेट हाइक जो है बहुत ब्लंट इंस्ट्रूमेंट है, वो पूरा आपका डिमांड नीचे कर देता है। तो आज जो मार्केट का रिएक्शन है वो थोड़ा रिलीफ रैली है, ये ज्यादा लंबा नहीं रहने वाला है। शॉर्ट्स काफी लोगों ने बना रखे थे सोच के काफी खराब पॉलिसी आएगी, वो नहीं आई, तो आज थोड़ा रिलीफ आ रहा है। बट ओवरऑल बहुत नेगेटिव है इस तरह का इन्फ्लेशन बढ़ना। और मेरे ख्याल से तो जो 2019 का स्टार्टिंग पॉइंट था 6.25% का रिपो का नंबर, वही करना पड़ेगा अगले 1 साल में। तो मुझे तो ये लंबी गेम है और लंबी अवधि तक हमारे रेट हाइक्स होते रहेंगे इन्फ्लेशन को काबू करने में, जब तक के ग्लोबल डिमांड ना गिर जाए, जब तक के यूक्रेन का मसला हल ना हो जाए। वो तो मुझे दिखता नहीं कई महीनों तक अभी होते हुए। तो RBI के हाथ में जो है रेट बढ़ाने हैं जिससे कि इन्फ्लेशन को काबू किया जाए, बट बहुत ब्लंट इंस्ट्रूमेंट है,
उससे जो बाकी इकोनॉमी जो तहस नहस हो जाएगी वो बहुत चिंता का विषय रहेगा। तो मेरे ख्याल से तो रिलीफ आ जा रहा है, बट इस पे ज्यादा ना जाए। ये बहुत ही चिंता का विषय है कि 1% ऑफ था आरबीआई 1 महीने पहले अपने आंकड़े से। तो इससे कैसे आप सोच सकते हैं कि इनका अभी भी प्रोजेक्शन ठीक रहेगा, जो ये 5.8 का लास्ट क्वार्टर अगले साल का बता रहे हैं? मुझे नहीं लगता इतना एक्यूरेट ये रह पाएंगे। सर गजब है, आप कहाँ से ढूंढ के निकालते हैं, एकदम परफेक्ट लॉजिक के साथ आपने बोला है। इसमें कोई डाउट नहीं कि अगर 1 महीने में ही 1% का आंकड़ा रिवाइज करना पड़े तो वाकई में चिंता की बात तो है, भरोसे की बात नहीं है। तो ये है आपके लिए। अच्छा राहुल, मैं आपके पास आऊँगा। आप कह भी रहे थे कि बाजार कैसा भी हो, मौके बहुत हैं इस बाजार में भी, अब भी स्टॉक स्पेसिफिक, और आज सुबह सुबह मौका भी दिया, अब फिर से बाजार मजबूत है। जरा बताएं पॉलिसी के बाद क्या कुछ खरीदना पसंद करेंगे आप? अनिल जी, मैं कोशिश करूंगा कि बगा जी मेरे आंसर से थोड़ा मुस्कुरा दें, क्योंकि काफी बेरिश साउंड कर रहे हैं इस वक्त। लेकिन देखिए अनिल जी, इन्फ्लेशन कल नहीं बढ़ा है, परसों नहीं बढ़ा है, ये बढ़ता जा रहा है। आप मुझे एक वीकेंड पे टॉप गन की टिकट खरीद के बता दीजिए, आपको नहीं मिलेगी। टॉप गन, जुबिलेंट फूड वर्क्स और वेस्ट लाइफ की आप सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देख लीजिए जिस तरह से आ रही है। आप रियल एस्टेट कंपनी के सेल्स को देख लीजिए। द फैक्ट इज दैट ये कुछ जो भी हो रहा है ये ओवरनाइट नहीं हुआ है। कंपनीज इससे गुजर चुके हैं और अर्निंग्स डिलीवर हो चुकी हैं। और अगर यहां से ट्रेजेक्टरी नीचे जा रही है, मैं बगा साहब से बिल्कुल सहमत हूं कि अगर लास्ट क्वार्टर में भी 5.8% है, इट्स वेरी क्लोज टू द अपर लिमिट ऑफ द टॉलरेंस ऑफ द आरबीआई, लेकिन वो 7.5% से 2% नीचे है, तो ट्रेजेक्टरी तो आपकी नीचे ही जा रही है। So I think that corporate India has gone through this period of inflation. सबसे अनिल जी, इसका एक सबसे बड़ा बैरोमीटर तो सीमेंट होता है। आप देख लीजिए सीमेंट पे हालांकि प्रेशर आया है, लेकिन उतना नहीं आया था जितना आना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने रियलाइजेशंस इंक्रीज कर दिए हैं। एशियन पेंट्स ने 18-20% से प्राइस हाइक ले लिया और मार्केट ने अब्सॉर्ब कर दिया है, और उनकी वॉल्यूम ग्रोथ 14-15% आ रही है। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज मे बी वी आर लिविंग इन अ स्लाइटली डिफरेंट वर्ल्ड ऑर्डर। और इसका मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन देता हूं अनिल जी, स्पेशली जहां हम फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करते हैं। FY22 जो कि साल खत्म हुआ, वो से रिकॉर्ड ईयर अनिल जी। चाहे वो ब्रोकरेजेस हो, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हो, रिकॉर्ड प्रॉफिट्स आए हैं। हम अपने ब्रोकरेज की भी बात करते हैं। द काइंड ऑफ बोनसेस एंड इंक्रीमेंट्स दैट हैव बीन पेड आउट फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर हैव प्रॉब्ली नॉट बीन सीन फॉर द लास्ट हाफ अ डेकेड। तो ये आपका कहां जाएगा? ये कंजम्पशन में ही आएगा। इट इज नॉट बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स हैव गॉन अप बाय 1% आई एम गोइंग टू स्टॉप माय कंजम्पशन। एट अ सर्टेन इनकम लेवल दिस रियली डज नॉट मैटर। इट मे मैटर एट सम पॉइंट इन द पिरामिड, बट बियॉन्ड द पॉइंट इट रियली डज नॉट मैटर। मैंने आपको पिछली बार भी कहा था अनिल जी, अगर 500 रुपए की टिकट 520 हो जाए तो कोई थिएटर जाने से मना नहीं करने वाला। और एक तरफ से अच्छा है कि आरबीआई ने 1% रेट हाइक कर दिया। जब गैंग्रीन होता है आप हाथ को काट के निकाल देते हैं, यू फिनिश द प्रोसीजर, सो यू आर फ्रंट लोडिंग इट। What it basically means is that from here it's only going to get better. You are not left with any ambiguity कि अभी 40 और आएगा, अभी 50 और आएगा। काफी हद तक ambiguity सिस्टम से बाहर चली गई है। तो जैसे आप चर्चा कर रहे थे आपके कॉलीग से, I think I would buy the entire rural theme right now. बिकॉज एक तो मॉनसून की प्रेडिक्शन अच्छी है, उसके बाद 18 महीने रह जाएंगे मॉनसून के बाद जनरल इलेक्शन की तरफ। तो ऑटोज जैसे आपने कहा, मैं सहमत हूं। बैंक्स जो आपने कहा, मैं सहमत हूं। मुझे लगता है कि 3 महीने बाद आप एफएमसीजी में एक ऐसा उछाल देखेंगे जो आपने पिछले 4 साल में नहीं देखा है। अच्छा। तो आपको शायद लीवर, ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर, ये बहुत बेहतरीन समय है इन सबको खरीदने का, क्योंकि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर सही गए और इन्फ्लेशन नीचे आई और रूरल कंजम्पशन जिनका उन्होंने ही जिक्र किया कि इट इज पिकिंग अप, तो आई थिंक ये 3 सेक्टर्स हैं जो काफी हद तक लीड कर सकते हैं मार्केट को आगे चल। ओह वंडरफुल, राय काफ़ी मिलती जुलती है हमारी। ऑटो, बैंक्स, एफएमसीजी तीनों ही हमारे पसंद की स्पेस भी है, सेक्टर्स भी है। बग्गा साहब भी कुछ जोड़ना चाहते हैं? जी सर। हाँ जी, देखिए अनिल जी, मेरे लिए तो राहुल बहुत ही अजीज हैं क्योंकि पंजाबी हैं, स्क्वॉश खेलते हैं, गुड लुकिंग और यंग है। तो मेरे लिए तो जो ये राहुल कहेंगे वही अच्छा है। बट मैं एक मैक्रो, और जो ज्यादा पंजाबी होते नहीं अक्लमंद, हमारे को कहते हैं एग्रीकल्चर करो आप जाके, तो जब पंजाबी ऊपर जाते हैं बैंकिंग जब शुरू इस बात से तो मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि आप है राहुल सर तो बैठे हैं, लेकिन उसके साथ साथ मेरे पैनल पे कहाँ आशु सर, बंसल जी और कौन कौन, मतलब
दीप सर, दीप मेरे साथ ही सोचिए, मतलब ये तो मतलब पता नहीं कब और किसने बनाई हो, गलत फहमी है कि लोगों की। जी सर बताइए जी। तो अनिल जी, ये मैक्रो तरफ से क्या मैं बोल रहा हूँ, मैं नॉर्मली बहुत बुलिश हूँ, बट क्या है जो WPI और CPI का जो डिफरेंस है ना, वो कंपनीज पास ऑन नहीं कर पाई। तो पहले क्या होगा, वैल्यूएशन लेवल्स, प्राइस अर्निंग लेवल नीचे गए इस क्वार्टर में, आगे जाके अर्निंग्स नीचे जाने वाले हैं, क्योंकि वो WPI CPI का या दो तरफ से, या तो कंपनी बैंकरप्ट हो जाए बिना पास ऑन किए, या पास ऑन करे तो आपकी डिमांड नीचे जाएगी। साथ में इंटरेस्ट रेट जब बढ़ते हैं इकोनॉमी के लिए, वो इकोनॉमी के लिए झटका होता है, इतना आसान नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि कॉशन का टाइम है, इसमें एकदम से कूदना नहीं है इस मार्केट में। हाँ, अपॉर्चुनिटीज आएंगे और राहुल जैसे कह रहे हैं वो अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छे हैं। तो एक्टिव स्टॉक पिकिंग का टाइम है, पैसिव टाइम नहीं है कि आप ETF खरीद के पूरा मार्केट खरीद के बैठ जाएं। शायद पूरा मार्केट कहीं नहीं जाएगा अगले 3 से 6 महीने, बट इसके सामने जो एक सिल्वर लाइनिंग है वो है कि मुझे लगता है कि सेकंड हाफ से थोड़ा हमें तब्दीली आती दिखेगी। ये जो अभी फ्रंट लोडिंग हुई है इंटरेस्ट रेट्स की, उसका जरूर इम्पैक्ट आएगा, और मुझे लगता है सेकंड हाफ बेटर रहना चाहिए मार्केट्स के लिए भी, इकोनॉमी के लिए भी। इसमें एक्सपोर्टर्स से मैं बोलूँगा दूर रहिए। अभी एक्सपोर्टर्स मुझे पसंद नहीं आ रहे, क्योंकि जो डिमांड जा रही है अनिल जी, वो सब अब सर्विसेज की तरफ जा रही है, एक्सपीरियंसेस की तरफ जा रही है। गुड्स की इन्फ्लेशन चाइना में ऑलरेडी, गुड्स का एक्सपोर्ट नंबर चाइना में ऑलरेडी हमें दिख रहा है कि नीचे जा रहा है। लोगों ने जो खरीदने थे ड्यूरेबल्स और वर्क फ्रॉम होम और वो सब चीज़ें, वो सब खरीद लिए गए पिछले 2 साल में। अभी ज़्यादा लोगों का फोकस रहेगा ट्रैवल पे, टूरिज्म पे, सर्विसेज पे, एंटरटेनमेंट पे, बाहर जाने में। यहाँ पे ज़्यादा फोकस रहने से हमारा एक्सपोर्ट, ये जो पिछले साल इतना हाई पे आया, उसको दिक्कत आने वाली है। तो उसमें आप थोड़ा सावधान रहिए एक्सपोर्टर्स की तरफ से, मैं कहूँगा। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा पॉलिसी का एक्शन और आगे के लिए भी पूरा का पूरा आउटलुक। विदा लेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के दमदार पैनल से। बग्गा साहब, वृंदा जी, राहुल अरोड़ा साहब और साथी महेंद्र जाजू साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय देने के लिए और पॉलिसी पर अपनी विचार विस्तार से रखने के लिए हमारे दर्शकों के सामने। आप कहीं जाइएगा नहीं, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं इस वक्त, और एक के बाद एक इस बढ़ते हुए बाजार में मजबूती से कॉल्स आने की तैयारी में। सुमित का सुपरहिट पहला बिगुल। बताएं सुमित जी। लग रहा है कि बैंकिंग स्टॉक्स में यहां से बढ़िया मूव बनेगा, तो आज और आने वाले दिनों के लिए बैंकिंग स्टॉक्स में यहां पे खरीदारी करें। जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है उसका अभी भाव चल रहा है 92 रुपीज 10 पैसा। स्टॉक का नाम है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक कल का परसों का हाई ब्रेक कर चुका है, 200 DMA लेवल्स अभी ये ब्रेक कर रहा है। मेरे को लग रहा है कि फेडरल बैंक में यहां से ऊपर का मूव बनेगा। 89 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें फेडरल बैंक। 95 रुपए, 97 रुपए, ये लेवल जल्दी ही फेडरल बैंक में ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे। ऑप्शन के जरिए भी यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है। फेडरल बैंक का 92 का कॉल अभी 3 रुपए 30 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। 2.5 रुपए का नीचे के अंदर स्टॉप लॉस, ऊपर में 4.5 रुपए से लेके 6 रुपए तक के टारगेट 92 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं, और स्पॉट लेवल्स में 95 से 97 के टारगेट के लिए खरीदारी करें फेडरल बैंक। ओके, फेडरल बैंक में खरीदारी करने की राय सुमित जी की तरफ से आती हुई इस वक्त। और आइए बढ़े आगे। उससे पहले दीप एक चीज और बताना चाहता हूँ कि पॉलिसी के बाद अगर बाजार नीचे गिरे तो आपको खरीदना चाहिए, डरने की बात नहीं, कैसी भी पॉलिसी आए। राइट, ये सुबह हम बात कर रहे थे कि इसमें बहुत डरिए मत। और आप देखिए पॉलिसी के बाद जो 34,840 का लो बनाकर कल के लोज के आसपास से जो रिकवरी दी है मार्केट ने, वो बेहद शानदार दी, बहुत बढ़िया है, बिल्कुल। और आप देखिए कल का लो बैंक निफ्टी ने नहीं तोड़ा, निफ्टी जरूर कल के लोज के नीचे गया, तो बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है बैंक निफ्टी ने और अभी भी दिखा रहा है। आइए आरबीआई गवर्नर साहब की पॉलिसी के बाद हमारे संवाददाता अनुराग शाह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरबीआई हेडक्वार्टर्स पर हैं वो, और एक बार उनसे समझते हैं, जानते हैं कि गवर्नर साहब ने जो बड़ी बड़ी बातें तो कही वो तो आप सबने सुन ली, समझ ली, जान ली और याद भी कर ली कि इन्फ्लेशन, जीडीपी ग्रोथ और साथ साथ ब्याज दरों में बदलाव, लेकिन पॉलिसी के अंदर की कुछ खास बातें अनुराग आपके लिए लेकर आ रहे हैं। अनुराग बताइए।
देखिए, जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनसे जुड़े हुए 3 बड़े ऐलान जो है आज की पॉलिसी में किए गए हैं। सबसे पहला तो कि जो होम लोन दिया जाता है कोऑपरेटिव बैंकों के द्वारा, तो उसकी जो लिमिट है उसको 100% तक बढ़ा दिया गया है। 100% तक, जो आखिरी बार 2009 में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए और 2011 में रूरल कोऑपरेटिव बैंक के लिए तय हुई थी। तो अब जो टियर 1 टियर 2 सिटी के अंदर जो लिमिट है वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की बढ़ा के 30 लाख से 60 लाख और 70 लाख से 1 करोड़ 40 लाख कर दी गई। इसके अलावा जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक है वहां पर जो लिमिट बढ़ा के 20 से 50 लाख की जो लिमिट थी उसे बढ़ा के 30 से 75 लाख किया गया है। तो जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से जो लोन लेने वालों के लिए काफ़ी अच्छी ऐलान किए गए हैं, जहां पर लिमिट 100% तक बढ़ा दी गई। इसके अलावा जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स है जिनके द्वारा लोन दिया जाता है, तो कमर्शियल रियल एस्टेट के लिए, यानी कोई रेजिडेंशियल प्रोडक्ट बनाता है वहाँ उन कंपनी के द्वारा, तो वो अब ये दिया जा सकेगा। तो ये एक बड़ा ऐलान है। ओवरऑल बुक के 5% तक का ये लोन जो है कमर्शियल कमर्शियल रियल एस्टेट के लिए दिया जा सकेगा, जो कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होगी। इसके अलावा डोर स्टेप बैंकिंग को भी कोऑपरेटिव बैंक है जो शुरू कर सकेंगे। तो ये 3 बड़े ऐलान थे। इसके अलावा आम लोगों के लिए काफ़ी बड़ा ऐलान किया है कि आप जो यूपीआई के ट्रांजेक्शन करते हैं, यूपीआई पेमेंट करते हैं, उसे क्रेडिट कार्ड से लिंक किया जा सकेगा। तो हमने देखा है कि पिछले कुछ वक्त में जिस तरह से यूपीआई ट्रांजेक्शन में मैनीफोल्ड बढ़ोतरी हुई है, हर छोटे पेमेंट के लिए, चाहे सब्जी का पेमेंट हो, चाहे पान वाले का पेमेंट हो, उसके लिए यूपीआई पेमेंट किया जाता है। तो अभी तक बैंक अकाउंट से जो लिंक होता था, तो वही यूपीआई अकाउंट जो है वो अब आपके क्रेडिट कार्ड से भी लिंक किया जा सकेगा। और ये शुरुआत में रुपे क्रेडिट कार्ड के साथ होगा और धीरे धीरे बाकी जो दूसरे मास्टर कार्ड और वीज़ा जो क्रेडिट कार्ड देते हैं उनके लिए भी मुहैया कराया जाएगा। और आखिरी में जो एक बड़ा ऐलान है ई मैंडेट का, ई मैंडेट जो अभी 5,000 तक की सीमा थी ई मैंडेट की बैंक के, उसको बढ़ा के अब 15,000 रुपये कर दिया गया है। ओके, तो ये है आपके लिए सारे के सारे कुछ बड़े ऐलान आज आरबीआई गवर्नर साहब की तरफ से होते हुए दिखे हैं। धन्यवाद अनुराग, ये सारे ऐलान विस्तार से हमारे दर्शकों को बताने के लिए। वागले साहब तैयार है अपनी कॉल के साथ। वागले का वंडर। जी वागले साहब बताएं सर। अनिल जी, बैंकिंग स्पेस के साथ ही रहना चाहूंगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 100 का लेवल पार किया है। 101 रुपये 50 पैसा, 101 रुपये 80 पैसा का करंट भाव है। मुझे लगता है ये 107 108 तक जाने के लिए तैयार है। यहाँ पर बाय करें 99 के स्टॉप लॉस से। 108 का मेरा टारगेट होगा 1 से 2 दिनों के व्यू से। 108 के टारगेट के लिए करें खरीदारी बैंक ऑफ बड़ौदा में और 99 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की राय आपके लिए। तो ये है आपके लिए कुछ दमदार स्टॉक्स, दमदार एक्शन वाले। आइए 11 बज चुके हैं, थोड़ा हम एक्सटेंड हो चुके हैं, लेकिन अब विदा लेने का वक्त है। 16,450 पर इस वक्त निफ्टी है और बैंक निफ्टी 35,350 के आसपास, 2 अहम लेवल के आसपास ट्रेड करते हुए बाजार 125 अंकों की तेजी सेंसेक्स में दिखेगी। डाउ फ्यूचर्स भी थोड़ा संभलते हुए अब सिर्फ 75 अंक नीचे बचे हैं और नैस्डैक फ्यूचर्स है 50 अंक नीचे। तो बेहतरीन रिकवरी दिन के हाई पॉइंट की तरफ बाजारों को फिर से लौटने का मौका मिला है, लेकिन वॉलेटाइल है। 16,500 के आसपास से प्रॉफिट बुकिंग भी आती दिख रही है। तो दोनों तरफ के ट्रेड लगातार होते दिख रहे हैं। ऐसे में आज का बचा हुआ ट्रेडिंग सेशन बेहद अहम, बेहद इंटरेस्टिंग भी रहेगा। आप सबसे फिर से मुलाकात भी होगी। फिलहाल विदा लेंगे। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, सुमित जी, आप सभी से बहुत बहुत शुक्रिया सुबह हमारा साथ देने के लिए। दोपहर के शो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक मुझे और दीप को इजाजत दीजिए और हर रोज की तरह देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम शो का समापन। सब खड़े हो जाएं अपनी जगह पर। जय हिंद। वाह शर्मा जी, बड़ी। आपका चहेता चैनल ज़ी बिजनेस अब आपके फिंगर टिप पर। लाइव टीवी, देश दुनिया, शेयर बाजार और बिजनेस वर्ल्ड का सारा एक्शन